I was on a Goa bike ride with my three friends and I visited lots of unexplored places which I am going to show you in this bike ride series. Here is just a short teaser of it. I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. On the Goa Day 2 vlog, I visited quite peaceful places from North Goa. Before we start this vlog, make sure you watch that video and hit the like button, and don't forget to subscribe to my channel Mr. Black and White. You can also follow me on Instagram and Twitter with the same ID. Check the link in the description. And don't forget to check out my Facebook page for more details of my previous and upcoming videos. I already knew that this day is going to be busy day because my stay location was in the Vasco and selected destination for the day was almost 40 kilometers, or you can say more than 40 kilometers away from the Vasco. Butterfly Beach is almost 55 kilometers from the Vasco. As soon as we left the main road, unconstructed road started and we had to do lots of off-roading with our TVS Apache machines. पहुंच के लगता है कैफे के इधर बटरफ्लाई कैफे है यहाँ पे कोई जो वहां से अंदर जाने चलो अंदर चलते चल अपन जितना लेके जा सकते उतना लेके जाएंगे यहाँ पे एक पार्किंग लगा है गाइस हमको बट हम लोग अंदर लेके जाएंगे बाइक और If you are visiting the Butterfly Beach for the first time, don't forget that the road is quite challenging. नहीं होगा अबे क्या शॉट होगा ये भाई जो बीच तक जाने का रास्ता था वो काफी छोटे छोटे ट्रीज एंड प्लांट से कवर्ड था. So it is difficult to identify in which direction we are going and where is the beach actually. Maybe that's why Butterfly Beach is considered as hidden gems of South Goa. Half an hour off-roading takes us to the unnamed parking spot, which is 1.5 kilometers from the Butterfly Beach. From this point, you have to walk towards the beach. लहरों की आवाज आ रही है यहाँ. तो गाइस हमने बाइक पीछे पार्क कर ली है अभी और अंदर 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा झाड़ियों में से ऐसे. तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे. पानी का आवाज़ आ रहा है समुंदर का. लेट्स प्रे कि ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे वहाँ पे एंड हम लोग ठीक से एंजॉय कर पाए. स्पीड बोट का आवाज़ आ रहा है फिर भी. बहुत पब्लिक है.
रुक जा, शूज निकाल के पहले। इसके आगे तू दसने का अपना आ जाए ना इधर तो ये है बटरफ्लाई बीच गाइस। अभी इसका नाम बटरफ्लाई बीच क्यों रखा है वो पता नहीं। शेप तो मेरे शेप तो बटरफ्लाई जैसा नहीं है, वो सी टाइप लग रहा है, सी टाइप लग रहा है ऐसा शेप। पूरा नहा के वगैरह बीच पे मस्ती करके हो गया ख़त्म। अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। चल के हम लोग पार्किंग तक आए। अभी सबकी हालत टाइट हो गई है, सबको प्यास लगी है एंड धूप काफ़ी है। तो आप अगर बटरफ्लाई बीच को विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ पानी या खाना कैरी करो, क्योंकि वहाँ पे एक भी शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोटिंग होता है वहाँ पे। तो चलो अभी बाइक चालू करते हैं एंड प्लेस ढूंढते खाने के लिए, एंड थोड़ा पानी भी चाहिए ठंडा। As soon as I left the Butterfly Beach area, me and my friends started looking for the good restaurant. My friend insisted that they want a restaurant with the sea view, so we decided to have our lunch at Dersey Cottage and Dersey Sea View Multi-Cuisine Bar and Restaurant. They didn't had a proper place for parking at that time, but food was delicious, and I must say quite affordable as compared to view they providing while eating. You have a doubt? Okay, let me show you the exact view from that place.
After having lunch at Agonda Beach, we headed towards the Kola Beach, which is almost 10 km from the Agonda Beach. Kola Beach is a private river beach and it is famous for kayaking. Lots of people visit Kola Beach only to do kayaking because there is no other place perfect for kayaking like Kola Beach. From the main road, if you are traveling towards the Kola Beach, you will get two parking spots. First one is near the main road and second one is almost 1.5 km from the first one, and it is exactly beside the actual beach. But there is a catch. The road from first parking to second parking is bit harsh for the new riders and drivers. Loose red sand is all over the road and there are lots of ups and downs, as you can see in the video. By the time you will reach to the second parking spot, this loose red sand will be all over you. So make sure you should cover your face and wear proper clothes according to the situation. तो गाइस ये है कोला बीच। यहाँ पे समंदर है और यहाँ पे रिवर जॉइन हो रहा है उसको, एंड यहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हो। सामने वो फेमस होटल है कोला बीच का, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स वगैरह आके रुकते हैं। कभी अपना हुआ उतना बजट तो डेफिनेटली वहाँ पे आके विज़िट करेंगे। तो गाइस हम लोगों ने सामान यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे प्रॉपर प्लेस नहीं है सामान रखने की। ये शेड है ऊपर, जैसे हर जगह पे पीछे भी 2-3 शेड्स हैं ऐसे, जो कायाक वाले बंदे हैं उनके शेड है ये। एंड यहाँ पे आपको सामान रखना पड़ेगा, इट्स नॉट सेफ, बट कोई अभी ऑप्शन नहीं है दूसरा। एंड ये है जो कायाक हम लोग चलाने वाले हैं अभी ना। तो फिर एक बोट में मैं और संख्या, और तुम दोनों को पूरा पैडल करना पड़ेगा। अलग अलग में बैठते, तू उसमें बैठ मैं इसमें बैठता, फिर अपन शूट कर सकते हैं। भाई कितना गीला है तो गीला तो है। ए केविन आगे जा, पीछे से शूट करेगा। अनुज तेरे को चलाना आता है ना? थोड़ा बहुत मार लेगा। ये अपने का चाहिए ग्रीन वाला, ये सूखा है थोड़ा भाई। मैं आगे बैठूं? हाँ तू आगे बैठना, मैं पीछे ये करता। एक मिनट भाई। हाय हाय। ओके पकड़ के। हाँ ओके चल, गिरा नहीं। Just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 That's it for this vlog, guys. We'll meet you in the next and last vlog of this Goa series, in which I'm going to show you some pretty good drone shots of Amboli Ghat and many more. So stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel Mr. Black and White. आप मुझे Instagram and Twitter पे भी follow कर सकते हो with the same name.
फेसबुक पे भी अपना पेज है तो आप उसे भी लाइक कर सकते हो. सो बाय गाइस, टिल द टाइम, ट्रैवल फार, एक्सप्लोर मोर एंड राइड हार्ड.